dear students, my name is Pranjal, wishing you all very good morning. Today I am here with the second video lecture of chapter 4, that is work, energy and power. In the previous video I have taught you about what is work. There were different aspects of work, how work is understood in the physical, that is in the language of physics. When any force is applied, then it causes some displacement, then it is said to be work. There were three types of work: positive work, negative work and zero work. In the today video lecture, we will discuss about all new topic, that is energy. We know that for the existence of life on earth, energy is must. Energy is required by all the living organisms to survive. But the thing comes, what is energy? Energy actually है क्या? Every organism need energy to do work. आपको काम करने के लिए, कोई भी काम है तो आपको एनर्जी चाहिए. In physics, in the language of physics also, you have to do a force. You have to apply a force if you want to displace any object. From where that force comes from? वो फोर्स आता कहां से है? If there will be no energy, then from where that force will come? अगर कोई एनर्जी ही नहीं होगी किसी के अंदर, तो वो फोर्स आएगा कहां से? So therefore we can say there are lots of energies that are present in our atmosphere, that are present all around us. And regarding the definition of energy, we can say the capacity to do work is known as energy. Any object that is doing work, that is possessing some energy. अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है. ओके, तो ये तो बात थी अभी तक एनर्जी की. नाउ वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑल अराउंड अस रिगार्डिंग एनर्जी. आपकी जो सोलर एनर्जी है, that is the best example. We know that the largest source of energy that is present in the universe is sun. एक जो सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, वो है सन, सूरज. The major portion of the energy that we get is from sun. उससे जो एनर्जी मिलती है, that is solar energy. That solar energy is used by the plants in the process of photosynthesis, and they make their food, which we consume. हम उसको कंज्यूम करते हैं to build our muscles and to do work physically. That means that solar energy is firstly converted into the food by the process of photosynthesis by the green plants. Means सबसे पहले सोलर एनर्जी किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है? केमिकल एनर्जी में. किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा. अब we get vegetables and fruits from the plants. When we consume them, we grow, our health grows, our body grows. As a result, we do more work. जब हम वर्क करते हैं, then we use our muscles. मसल्स का यूज करके हम कह सकते हैं कि जो सोलर एनर्जी थी
वो चेंज हो रही है किसमें? मस्कुलर एनर्जी। There are several other sources of energy also. Renewable source of energy. Renewable means those sources of energy which can be renewed after exhausting. कह सकते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो कि एक बार खत्म होने के बाद फिर से जिनको रिन्यू किया जा सकता है वो होते हैं रिन्यूएबल। For example, all the sources of energy that we get from nature is renewable. नेचर से जो हमको मिलता है जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, that is renewable form of energy. And what is non-renewable? Non-renewable source of energy are fossil fuels. When they are once exhausted, we cannot renew them. एक बार अगर पेट्रोल का यूज कर लिया, एक बार कोयला जला लिया तो वापस वो नहीं आ सकता. That gets exhausted. Okay. So another example of energy is wind energy. Wind energy में क्या होता है? आपका जो हवा चलती है, by using that wind power, we just make electricity by the process of windmill. Windmill आपने देखी होगी. Windmills क्या होती हैं? बड़े बड़े फैंस टाइप के होते हैं. विंड उन फैंस को ड्राइव करती है एंड दैट फैन इन टर्न ड्राइव्स द बेल्ट ऑफ टरबाइन. टरबाइन जो है वो उस जैसे जैसे वो फैन मूव करते हैं वो फैन टरबाइन के ब्लेड्स को मूव कराते हैं और जब टरबाइन के ब्लेड मूव करते हैं देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है. थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी द एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम कोल. कोल को जब हमने बर्न किया then we get light energy as well as heat energy. Okay, so there are different types of energies. Nuclear energy भी है. Nuclear energy में क्या है? I think most of you have none about what is nucleus. The most basic or fundamental unit of life of the matter is atom. Fundamental unit of life is cell, but the fundamental unit of matter is atom. तो एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है that is nucleus. The electron revolves around the nucleus and inside the nucleus there are two elements that are proton and neutron. अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? When two atoms combine to form a bigger atom, जब दो छोटे छोटे एटम आपस में कंबाइन कर लेंगे एक बड़ा एटम बनाने के लिए, then this process is called nuclear fusion. Fusion means जोड़ना. Okay, and what is nuclear fission? When a bigger atom breaks into two smaller atoms, and in both the process, nuclear fission and fusion both, the energy is released. तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हुई है that is known as nuclear energy. Tidal energy, the energy possessed by the water. आपका जो टाइड्स उठते हैं ओशन में उनका यूज करके जो एनर्जी हम लोग हार्नेस करते हैं दैट इज नोन एज टाइडल एनर्जी. So these were the different types of energies. You have to read them thoroughly that are given into your book also. Our next topic is also from the one of the energy.
that is mechanical energy. First of all, we have to know what is mechanical energy. The energy due to the position and the motion of any object is known as the mechanical energy. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन के द्वारा जो एनर्जी होती है दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी के भी दो पार्ट्स हैं. एनर्जी ऑल्सो हैज टू पार्ट्स. वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर वन इज पोटेंशियल. The energy due to the motion of any object is known as kinetic energy. आपकी जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण है उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी. जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, इट मींस इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी. इट इज पॉजिटिव सम काइनेटिक एनर्जी. एंड इफ an object is lifted from the ground means कि उसकी पोजीशन इनिशियल वो ग्राउंड पर रखा था एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वी लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट अप टू सर्टेन हाइट, then the energy possessed by that object is known as the potential energy. तो ये डिफरेंस था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है हाफ mv स्क्वायर. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, where m is the mass of the object, g is the acceleration due to gravity, and h is the height up to which that object was lifted. Okay, what is half mv square? M in the formula of kinetic energy, m is the mass of object and v is the velocity by which it is moving. Therefore एक चीज तो क्लियर है कि when any object is stationary it means it doesn't have any kinetic energy. Why? क्यों? The reason is when any object is at rest, at stationary, then the velocity will be zero. उसकी velocity तो zero होगी. And we know that the formula of kinetic energy is half mv square. तो half into m जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट का मास, उसमें अगर इंटू करेंगे जीरो का, that means kinetic energy is zero, everything is zero. अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. If any object is placed on the ground, that means कि उसकी इनिशियल पोजीशन वही है और फाइनल भी वही है. क्यों? क्योंकि उसने कोई हाइट नहीं अटेंड की, उसको लिफ्ट नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन सेम रह रही है. There is no changement in the position. और जहां पर चेंजमेंट पोजीशन में नहीं होगा वहां पर इसका मतलब h जीरो हो जाएगा. If the mass of any object is 1 kg and we know that the value of acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and the value of h is 0, that means everything is 0 because the formula for potential energy is mgh. Okay, now we will study the derivation for the expression of काइनेटिक एनर्जी. अब हम लोग पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो ये फॉर्मूला आया है वो कैसे आया, डिराइव करेंगे. लेट अस सपोज देयर इज अ बॉडी हैविंग मास m that was moving with initial velocity u and any force is applied and after applying some force that body start moving with a final velocity v. Therefore the acceleration in that body is a
and the displacement in that body after applying the force is s. ये सब चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ये आप सबसे पहले अगर आपको डेरिवेशन आएगा तो सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि लेट देयर इज एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड सो ऑन। आफ्टर दैट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, फ्रॉम हियर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां से s की वैल्यू निकालने अगर तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगी। Consider this as equation first. Okay. Now we know that the work done, the formula for work done is force into displacement, force into displacement. Now force means F into displacement means S। अब आप S की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो मानी थी हमने यहां पर, उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी डिस्प्लेसमेंट की जगह। नाउ we know that F is equal to ma from Newton's law। F is equal to ma हमको पता है, तो F की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से आप देख सकते हैं a to a कैंसिल हो गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। This is formula for work. Now, if the body was at rest initially, अगर इनिशियल पोजीशन पर अगर वो बॉडी रेस्ट पर रखी थी, इट मीन्स u will be 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। या हम कह दें कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर रखी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, जाहिर सी बात। यहां पर इफ द बॉडी वॉज एट रेस्ट इनिशियली देन u इज इक्वल टू 0। अब w इज इक्वल टू half m v square minus 0, that means half m v square। And we know that what is energy? Energy is the capacity to do work। हमको डेफिनेशन पता है एनर्जी है क्या, एनर्जी है तो वर्क ही। तो यहां पर हमने क्या किया, w को E से रिप्लेस कर दिया। E कौन सा, काइनेटिक एनर्जी वाला है, इसको Ke is equal to half mv square। This was the derivation for kinetic energy, expression for kinetic energy expression for Ke। Okay, and one more thing, the energy, the unit of energy and work is also the same, because आपको अभी मैंने बताया कि एक्चुअली एनर्जी है क्या, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तो एक प्रकार का वर्क ही ना, दैट मीन्स द यूनिट इज ऑल्सो द सेम।
Now deriving the expression for potential energy. Potential energy में मैंने आपको बताया when any body is lifted at some height, it means if any body was at ground initially and after some time it comes to position A to position B, it means it has attained some height. Okay? जब इसको किसी ऑब्जेक्ट को और ग्राउंड से हम किसी एक हाइट पर लिफ्ट करते हैं, देन वी हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. ये बिल्कुल सेम केस हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वाला. दैट मीन्स जो भी हम वर्क करेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट, दैट विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट. वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में. ओके, सो लेट्स नाउ derive an expression for potential energy. इसमें भी आपको सेम, सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा लेट अस सपोज देयर इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दैट इज लिफ्टेड टू ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड. Then the force applied against the gravity is equal to the weight of that object. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो वेट उस किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है. Here we know that force is equal to weight of object and we know that weight is equal to m into g. और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जितना की हाइट h. कोई ऑब्जेक्ट था इस पोजीशन में था इनिशियली, after some time it came to this position. That means there is displacement of h in it. Here we know that the formula for work done is force into displacement. We know that the force is equal to mg and displacement is h. Therefore, W is equal to mgh and this W is stored as potential energy in that object because its position is changing. जब पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब जो W है वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. Now replacing this W as with PE, potential energy. Therefore, potential energy is equal to mgh. Okay? तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन. This is very simple. Okay? Now you have to solve some numericals that are given into your book, and if you face any kind of problem, then you can ask. पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट एग्जांपल्स भी दिए, ठीक है. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी केवल पोजीशन चेंज में ही नहीं होगी, शेप चेंज में भी होगी. तो आप पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन लिखेंगे दैट विल बी लाइक दिस: द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स चेंज इन द पोजीशन एज वेल एज चेंज इन द शेप एंड साइज आल्सो. ओके, अब ये तो आपने पोजीशन चेंज का एक एग्जांपल देख लिया. व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन द शेप एंड साइज? लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ कैटापुल्ट. कैटापुल्ट जो होती है
उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बुलिंग। व्हेन वी स्ट्रेच दैट, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, इट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ दैट कैटरपिलर। उस कैटरपिलर का जो रबर बैंड है उसको हमने क्या किया, उसका शेप चेंज किया, और जैसे ही शेप चेंज हुआ उसमें, वैसे ही उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। एंड व्हेन वी रिलीज दैट स्टोन that we have holded by the catapult, then that potential energy is transformed into kinetic energy and the stone attains some height, it starts moving. तो आप यहां पर देख रहे थे कि जैसे ही स्ट्रेच किया, जैसे ही शेप चेंज हुई उस इलास्टिक बैंड की, इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही उसको रिलीज किया हमने, वैसे ही वो स्टोन दूर गिरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी, जैसे ही हमने रिलीज किया उसको, उसने सारी अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर दी उस ऑब्जेक्ट को, एंड दैट केम इनटू मोशन। एज अ रिजल्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। You know that when any object is in motion, then it must possess kinetic energy. तो ये तो एग्जांपल था, इसी को ही हम लोग जनरली कह सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक टर्म इसको दिया गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हेन वी लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट इज एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, then it has to do work against gravity. That potential energy is also known as gravitational potential energy. Combined form में दोनों को मिलाकर हम सीधे एक जनरल टर्म्स में हम बोल सकते हैं कि that means gravitational as well as elastic both are potential energies. Okay. So students, this was all for today. If you feel any kind of difficulty, any kind of problem, then you are free to ask. Thank you.